सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अबाउट फ्लक्स। तो हमें गिवन है दैट देयर इज़ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन and all its dimensions are given to us, and now 2 point charges are kept at different locations on the axis of this frustum. तो एक चार्ज हमने बाहर रख दिया, एक चार्ज अंदर रख दिया, Q1 and Q2, and we have to find the flux through the curved surface of the frustum, through the curved surface, right? So of course we will apply the concept of superposition, right? Superposition. And what does that mean? So superposition is a principle that applies in all of electrostatics. Electrostatics में हर जगह superposition apply होता है for fields and potentials and flux, not for potential energy. But that's what I meant when I said in all of electrostatics. What I meant was that any charge there might be any charge configuration, and if you have to find the field or potential or flux, because flux भी electric field से आता है. So if you have to find these quantities, you can divide the configuration into many parts and find the individual field due to each part and then add the sum. तो सुपरपोजिशन से हम क्या करेंगे कि पहले हम ड्यू टू Q1 निकालेंगे फ्लक्स. So let me call that phi1, right? And then we will find due to Q2 and then we will add the results. तो ड्यू टू Q1 अगर मैं phi1 बोल रहा हूँ तो उसको मैं कैसे एनालाइज करूँगा कि इस डिस्क के थ्रू कुछ अंदर फ्लक्स जाएगा और इस डिस्क के थ्रू कुछ बाहर जाएगा और कर्व्ड सरफेस के थ्रू बाहर जाएगा, राइट? एंड इफ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड्स, देन दिस फर्स्ट एरो जो यहाँ फ्रंट वाले छोटे सरफेस से सर्कुलर सरफेस से अंदर फ्लक्स गया, दैट मस्ट बी इक्वल टू द अदर टू, बिकॉज नेट फ्लक्स ड्यू टू Q1 थ्रू द सरफेस ऑफ दिस फ्रस्टम मस्ट बी ज़ीरो, राइट? तो ये दिस इक्वेशन आई कैन राइट एज the flux through the curved surface should be equal to flux through the first surface, which I'm calling 3r/4, minus flux through the second surface, which I'll call r. And here ये सारी चीज़ें magnitudes हैं, right? These are all magnitudes of the fluxes. This is coming from the fact कि total flux through the curved surface, total flux through the entire frustum due to Q1 should be 0 because Q1 is outside, right? So this is Gauss law. This is application of Gauss law, or you can simply say that it is observation that if you draw field lines starting from Q1, अगर Q1 से start होती हुई field lines हम draw करते हैं, then all of those field lines pass through this frustum. Like they don't end inside the frustum, they start outside. तो यहाँ से field lines हमारी start होती हैं and then they go like this, right? And because of how these field lines go, the total flux that enters through this is equal to the total flux that leaves through these two. क्योंकि यहाँ से मेरे को फील्ड लाइंस बाहर जाती हुई दिख रही हैं इन दोनों सरफेस से, और इस फर्स्ट सरफेस से मेरे को फील्ड लाइंस अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं. सो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे यूजिंग द रिजल्ट्स दैट वी नो, कि एक सर्कुलर डिस्क के एक्सिस पे चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उस डिस्क के थ्रू फ्लक्स कितना होगा. तो उसका रिजल्ट होता है Q1/2 एप्सिलॉन नॉट into 1 minus cos theta, and that cos theta is the angle made at this point. So this will be theta in this case, right? So 1 minus cos theta. So that will be
right? And minus the flux through the second disk. तो same formula लगाना है, but this time the cos theta will be measured like this. So this will be the theta now. So 1 minus cos of that angle will be right. तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो we will get the 1 will cancel and from the second bracket we will get 3 by root 10, and from the first bracket we will get 4 by 5. तो ये फ्लक्स आ गया थ्रू द कर्व्ड सरफेस बिकॉज ऑफ Q1. नाउ मूविंग ऑन टू Q2, so I will copy this figure. Right, तो फ्लक्स ड्यू टू Q2 थ्रू द कर्व्ड सरफेस. तो इस बार हम कैसे सोचेंगे कि द टोटल फ्लक्स, इफ आई डिफाइन फ्लक्स लीविंग टू बी पॉजिटिव फॉर ईच सरफेस. तो पिछले प्रॉब्लम में भी मैंने कुछ चीज़ों को पॉजिटिव डिफाइन कर दिया था डायग्राम में ड्रॉ करके, कि जैसे मैंने ये वाला डायरेक्शन, अंदर जाने वाला डायरेक्शन, जब मैं Q1 का निकाल रहा था तो इस सरफेस के थ्रू अंदर जाने वाले फ्लक्स को मैंने पॉजिटिव बोल दिया था, राइट, बिकॉज आई वांटेड टू अप्लाई एन इक्वेशन विद सेड कि इसके थ्रू जो फ्लक्स अंदर आ रहा है दैट इज इक्वल टू फ्लक्स लीविंग फ्रॉम हियर एंड फ्लक्स लीविंग फ्रॉम देयर, राइट. तो हर सिचुएशन में फॉर माई कन्वीनियंस, ताकि मेरे को सोचने में आसानी लगे, मैं एक पर्टिकुलर कन्वेंशन के हिसाब से साइन कन्वेंशन को डिसाइड कर लूँगा और उस साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक इक्वेशन लिखूँगा. और ऑब्वियसली साइन कन्वेंशन हियर हैज़ बीन चोजन कीपिंग इन माइंड दैट ऑल माई टर्म्स आर पॉजिटिव. इसलिए मैंने बोला इक्वेशन मैंने मैग्नीट्यूड्स के टर्म्स में बनाई, और उसको बोलने का दूसरा तरीका है कि ऑल माई टर्म्स वर पॉजिटिव बिकॉज दैट इज़ हाउ आई चोज माई साइन कन्वेंशन. तो इस केस में भी आई नो कि तीनों सर्फेसेस के थ्रू फ्लक्स बाहर जा रहा होगा, तो उसको पॉजिटिव ले लेते हैं एंड देन वी विल अप्लाई गॉस लॉ. तो अब मैं कर्व्ड सरफेस के थ्रू अगर लिखूँगा फ्लक्स, तो लेट मी कॉल दिस 1, लेट मी कॉल दिस कर्व्ड, और ये सॉरी इसका नाम तो 3r/4 रखने वाला था मैं. सो लेट मी जस्ट से 3r/4 plus flux through R must be equal to Q2 by epsilon naught. This is due to Q2. और ये क्या है? ये गॉस लॉ है. And these are also magnitudes. So then phi through the curved surface plus, तो इसको कैसे लिखेंगे? Q2 by 2 epsilon naught, again applying the disk formula. तो यहाँ पे भी कुछ एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ ये एंगल बन रहा है अल्फ़ा, यहाँ ये एंगल बन रहा है बीटा. तो 1 minus cos alpha, so it will be cos of that angle plus again applying the disk formula on the other side, is equal to, तो ये गॉस लॉ लग गया यहाँ पे. तो मेरे को पहला टर्म निकालना है, तो आई विल जस्ट टेक द अदर टू टू द अदर साइड
and this time also phi 2 upon epsilon naught will cancel, q2 upon epsilon naught will cancel, and I will get this term, which is again 4 by 5 and plus 1 by root 2. So this is my phi 2. This is my phi 2. So now what about phi 1 plus phi 2? So total flux. So I will apply superposition and I will add both terms. So total flux through curved surface is equal to phi 1 plus phi 2. So that will come out to be 1 by 2 epsilon naught into Q1 So this is what I get. This is the answer.